A very good morning, Jai Hind, my dear students. I am welcoming you once again to the EVS class. Children, do you remember yesterday we have started a new topic, a new chapter, and what was the topic? Chapter number 12, that is In My House. So, yesterday I was telling you about the different rooms of the house, right? So, here you can see, yesterday also I have shown you this, right? It's a model of a house, right? Now, as I told you that a house has many, rooms. Just a second, I'll just show you. Okay, so just give me a second. And you can see, the house has many rooms. Okay, so now I'll show you something. Just give me a second, and here I show you. Right, can you see? Now children, here you can see that room. Okay, let me just keep this thing in front of the camera. Right, so now children, you can see here that house has so many rooms, right? You can see when we enter inside the house, there is a drawing room that is also called as living room. Then there is a bedroom, there is a kitchen, there is a bathroom, and then in some house we also have a lawn, right? So these are the just I'm showing you the models that how a room has different how a house has different rooms for different purpose, right? So as I told you, like a living room or a drawing room is used for what? To entertain our guests, right? Most of the time with our family members, we share our time, we sit together, we enjoy together with our family members in the living room, right? Or the drawing room. And then when we need to go to sleep, then we go to the bedroom, right? And then if we have to prepare food, we go to the kitchen, and if we have to take bath, then we have to go to the bathroom, right? And in where to garden the things, to garden flowers, to garden vegetables, or an open space that is called as lawn or a small garden, right? That is a beautiful thing our house has, right? So our house can have a sloping roof, like this house has a sloping roof, or a flat roof, any roof it can have. And our house can be a kacha house or even a pakka house. It depends whichever house it is. Kacha house, you know that it can't be multi-storied because it is made up of temporary things. So it is single-storied, a ground floor a house. Generally it is quite small also, right? But a permanent house can be a one-storied or a multiple-storied, right? So now I want you all to take out your book. Are you all having your books? So I'm having my EVS book with me. Let me show you. Here it is. So I'm sure that you all also have this book, EVS book. Please take this out and open page number 44 of the book. Okay, page number 44. Here, let me show you. This one. In My House, page number 44. Okay. Till the time, let me just share the screen. So it's easy for you to understand, right? So here it is. We are starting with chapter number 12, In My House. Are you all ready? So let's start then reading out the chapter. Okay. Before you start reading out with me, let's first write down today's date and classwork here at the top. So please write down today's date. What is today's date? You know that? 24th, right? 24th of November, right? So November is the 11th month of the year, and just one more month for this year, that is December, and then the year is gone. 2020 is gone, right? So I hope that you have written the date and classwork. Then let's start reading, okay?
So see, you can see here there's a boy and he is telling you something. Let's see what he wants to tell you all. Hello friends, welcome to my house. I live here with my family. So what the boy is saying? He is saying that hello friends. He is waving you all and he is saying hello friends and welcome to my house. So this house, the picture that you can see here, this belongs to whom? This belongs to this boy, right? And he is welcoming you all and he is telling you that I live here with my family. So this boy lives here with his family in this house. Okay? We all live in a house. हम सब घर पर रहते हैं ना? कोई सड़क पर रहता है क्या? नहीं ना. एटलीस्ट हम इतने तो ब्लेस्ड हैं गॉड से. यस, कुछ लोगों को सड़क पर भी रहना पड़ता है. मैंने आपको माई हाउस चैप्टर में बताया था ना. लेकिन हमें इस चीज़ के लिए भगवान को, गॉड को शुक्रिया करना चाहिए दैट वी हैव अ शेल्टर, वी हैव अ हाउस, राइट? वी ऑल आर लिविंग इन अ हाउस. सो अ हाउस में हैव मैनी रूम्स. Different rooms are used for different purposes. Some houses have a lawn and many balconies. Let us study about the various rooms of a house. So what does this mean? Well, the meaning of this particular paragraph is that we all live in a house. हम सब house में रहते हैं और एक house में बहुत सारे rooms होते हैं. There are many rooms in the house, right? Different rooms are used for different purposes. अलग अलग room अलग अलग purpose के लिए use किया जाता है. And some house में कुछ ऐसे भी houses होते हैं जहाँ lawn होता है. What is the meaning of lawn? I told you it's a garden, है ना? Garden जहाँ पर सुंदर सी घास होती है, plantations किए होते हैं, so that is called as lawn. And some also have balconies. जो लॉन कहाँ हो सकती है? लॉन जनरली जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं वहाँ पे लॉन होती है. आजकल लोग टेरेस लॉन भी करते हैं, टेरेस पर भी लोग लॉन्स करते हैं, वो आर्टिफिशियल लॉनिंग होती है. बट देन जनरली आप देखेंगे ग्राउंड फ्लोर पर लॉन्स होते हैं. लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पर रह रहा है तो उसके पास तो लॉन नहीं रहेगा, मिट्टी तो वहाँ है नहीं, अर्थ नहीं है. सो देन देयर दे हैव बैल्कनीज टू. बैल्कनीज है, वो बैल्कनीज में बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं एयर, फ्रेश एयर को, सनलाइट को, राइट? सो लेट अस स्टडी अबाउट द वेरियस रूम्स ऑफ अ हाउस. ओके, आर यू ऑल रेडी? लेट्स स्टार्ट. This is a bedroom. We take rest and sleep in this room. So this particular picture you can see, this is a bedroom. Okay, and in the bedroom, what is the purpose of a bedroom? The bedroom is used to take rest or to sleep, right? In this room we sleep or we take rest. At night we sleep, and in the afternoon also, if we feel really very tired, sometimes we take a small nap to take rest in the afternoon, right? So this is a bedroom and the purpose of it is to sleep, right? Next, okay, do yourself write about the type of house you live in and the different rooms in your house. So this you can do it, right? If you are having a scrapbook, you can do this activity. You can write about the type of house that you live in, kacha house or a pakka house, and then you can tell about the different rooms that you are having in your house, how many rooms you have, and then what are the different purposes of the rooms that your house has, right? Now let's see the next one. See this picture? It's a kitchen, right? So this is a kitchen. My mother cooks food in the kitchen. Not only our mother cooks food, but not only our mother cooks food, in fact our father, our grandparents, our brother, elder brother or elder sister or uncle, aunt, anyone who loves to cook, they can cook food in the kitchen. It is not only that mother cooks food. Nowadays everybody, nowadays nahi, pehle se bhi, anybody can cook food who knows cooking, right? So the food, the day का जो meal है, हम खाना खाते हैं, breakfast लेते हैं, lunch लेते हैं, शाम का snacks लेते हैं, रात का dinner लेते हैं, वो सारा कहाँ पकता है? Drawing room में पकेगा क्या? नहीं ना, it is cooked in the kitchen, right? Now next one, see this, it's a beautiful room, and which room it is?
the family spends most of the time together in the drawing or living room. So we can call this as a drawing room, or we also call this as a living room, right? So the family members, they spend most of the time in the living room or in the drawing room, and they talk to each other. They share their work throughout the day, whatever they have done, and then also not only that, we also entertain our guest in this room. हमारे घर पे जब कभी कोई गेस्ट आता है, बाहर से कोई आया है, अंकल आंटी कोई मिलने आया है, तो हम उनको कहाँ बिठाते हैं? किचन में लेके जाते हैं? नहीं ना, बेडरूम में डायरेक्ट लेके जाएंगे. जब हमारे बेडरूम में हम कब लेके जाते हैं? जब हमारे कोई बहुत क्लोज रिलेटिव हैं तो हम उनको बेडरूम में भी बिठाते हैं. लेकिन जब कोई ऐसे गेस्ट, फॉर्मल गेस्ट आते हैं, तो हम उनको कहाँ बिठाते हैं? हम उन्हें लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, है ना. ड्राइंग रूम में क्या होता है? सोफा होता है, चेयर होता है, टेबल, सेंटर टेबल होता है, टेलीविजन होता है, राइट, शेल्व्स हो सकते हैं, ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, राइट. तो ये सारी चीजें रहती हैं. एंड देन वी मेक देम सिट, we make the guests sit in the drawing room. We serve them what? We serve them water, we serve them snacks, है ना. आप करते हैं कि नहीं? जब कोई घर पर आपके गेस्ट आता है तो आप सर्व करते हैं, फूड करते हैं ना. That's very good. आपको स्नैक्स सर्व करना चाहिए. एंड यू शुड ऑलवेज ग्रीट योर गेस्ट वेरी नाइसली. आपको नमस्ते या वेलकम कहना चाहिए, राइट. So now let's see the next room. This is a picture of a bathroom. This is a bathroom. We take bath in the bathroom, right? हम बाथरूम में बाथ लेते हैं. मॉर्निंग में हम टॉयलेट के लिए भी यूज़ करते हैं. whenever we have to clean something, हमें कपड़े वगैरह क्लीन करने हैं, या टॉयलेट यूज़ करना है, वॉशरूम यूज़ करना है, या हमें बाथ लेना है, तो देन वी यूज़ दिस बाथरूम, राइट. Now let me tell you a very important and very interesting fact. Do you know the Rashtrapati Bhavan in Delhi has around 340 rooms. आपके घर में कितने रूम्स होंगे? शायद आप कहोगे 2, 3, 5, 10, 20 ज़्यादा से ज़्यादा. लेकिन आपको पता है राष्ट्रपति भवन क्या होता है? आपको पता है? हमारे प्रेसिडेंट, कौन है हमारे प्रेसिडेंट? हमारे जिन्हें प्रेसिडेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रपति, है ना. सो हमारे प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद. मिस्टर रामनाथ कोविंद, है ना. प्रेसिडेंट के नीचे प्राइम मिनिस्टर होते हैं. सो सबसे हाईएस्ट पोजीशन कंट्री में किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है. ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन, राइट. सो हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? क्या, कौन से हाउस में रहते हैं? वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जो कि दिल्ली में है. कहाँ पर है? दिल्ली में. आप अगर गूगल पर टाइप करेंगे, सर्च करेंगे राष्ट्रपति भवन, तो आपको राष्ट्रपति भवन का पिक्चर भी देखने को मिलेगा. बहुत बहुत बड़ा हाउस है. इट्स अ बिग हाउस. और राष्ट्रपति भवन को दिल्ली अगर आप घूमने गए होंगे तो आप में से श्योर बहुत सारे बच्चों ने राष्ट्रपति भवन भी घूमने गए होंगे. अंदर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हम बाहर से देख सकते हैं. वहाँ बहुत बड़ा गार्डन भी है, बहुत सुंदर जगह है. एंड इट्स अ वेरी बिग प्लेस. बहुत सिक्योरिटी रहती है, आप कभी अंदर नहीं जा सकते, बिकॉज वो बहुत बड़े व्यक्ति है. ही इज एन ऑनरेबल पर्सन. सो दैट्स वाई वी कांट एंटर इन हिज हाउस. बट यू नो, उनका जो घर होता है राष्ट्रपति भवन, जिसे हम कहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं, प्रेसिडेंट के हाउस में कितने रूम्स हैं? 340 रूम्स. बाप रे, सोचो तो जरा कितने सारे रूम्स होंगे ना. हम तो खो भी जाएंगे उसी रूम्स में कि एक रूम से दूसरे रूम में कहाँ जाएं, कैसे जाएं, है ना. लिविंग रूम से ड्राइंग रूम, बेडरूम में कैसे जाएं, बेडरूम से दूसरे रूम में कैसे जाएं, है कि नहीं, है ना. कंफ्यूज हो जाएंगे. बट वहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारे लोग होंगे क्लीनलीनेस रखने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए.
Definitely there are many staff members, they are working there, right? So it's a very important and interesting fact that you have got to know. Please try to search more and more, get more information about राष्ट्रपति भवन, because I am sure कि आपको नहीं पता होगा राष्ट्रपति भवन क्या है और कैसा दिखता है. तो आप ज़रूर मॉम डैड को बोलेंगे, आपको वो ज़रूर दिखाएंगे. गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, नेट पर आप देखेंगे, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे. ठीक है. नाउ let's read out the next thing. Okay, so this is a study. Well, ये study हम नहीं होना चाहिए. I think बेटा there is some टाइपिंग एरर, यहाँ पर कुछ एक मिसप्रिंट हुआ है. सो देयर हैज टू बी रूम. यहाँ पे आप स्टडी के आगे रूम लिख लीजिए. दिस इज अ स्टडी रूम. मेंबर्स ऑफ द फैमिली रीड बुक्स इन दी स्टडी रूम. तो यहाँ पर ये स्टडी रूम है जहाँ पर हमारे घर के अलग अलग मेंबर्स सब लोग पढ़ते हैं. बहुत लोगों के घरों में छोटी सी लाइब्रेरी भी होती है, शेल्व्स होते हैं जहाँ वो बुक्स से भरे होते हैं. अलग अलग ढेर सारे बुक्स रहते हैं. पापा मम्मा आपके या ग्रैंड पेरेंट्स आपके अगर जिनको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है वो बुक्स ऐसे शेल्फ में रखते हैं. वहाँ ठीक उसके पास चेयर टेबल रखते हैं और वहाँ वो बैठकर पढ़ते हैं, है ना. So that is called as study room. Okay. Now next one. This is dining room. Now see, first let's read this one. Do it yourself. Count the number of doors and windows in your house. It's a very interesting thing, right? तो आज आप क्या करने वाले हैं? आपको अपने घर पे कितने doors और windows हैं उनको count करना है. ठीक है. And see कि कितने doors and windows हैं आपके घर में. Okay. Single digit में आता है या double digit में आता है. Okay. Now next, see this one. This is a dining room, right? So a dining room is a room where all the members of a family take their meals. सारे घर के members खाना कहाँ खाते हैं, meals कहाँ लेते हैं अपना? In the dining room, है ना. dining room में क्या होता है? dining table होता है, chairs होते हैं, refrigerator भी होता है और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, right? So this is a dining room. And see, children, very important. A good house should have many doors and windows. Keep the windows open so that fresh air and sunlight may enter easily. We should keep our houses neat and clean. हमें हमारे हाउस को नीट एंड क्लीन रखना है. देखो अगर हमारे घर में ढेर सारे विंडोज होंगे, डोर्स होंगे तो क्या होगा? There will be a proper ventilation in the house. Air circulation अच्छा रहेगा, sunlight आएगी, and so our house, our rooms will be germ free, है ना? है कि नहीं? So this is what we have learnt about this chapter. So can we just read it out once again? चलो अब जल्दी से रीडिंग करेंगे हम एक साथ. We all live in a house. A house may have many rooms. Different rooms are used for different purposes. Some houses have a lawn and many balconies. Let us study about the various rooms of a house. This is the bedroom. We take rest in this room. This is the kitchen. My mother cooks food in the kitchen. The family spends most of the time together in the drawing or living room. We also entertain our guests in this room. This is a bathroom. We take a bath in the bathroom. Do you know the Rashtrapati Bhavan in Delhi has around 340 rooms. This is a study room. Members of the family read books in the study room. Dining room is a room where all the members of a family take their meals. A good house should have many doors and windows. Keep the windows open so that fresh air and sunlight may enter easily. We should keep our houses neat and clean. Very important. We must keep our house neat and clean, right? Now children, please get your pencil, eraser and a scale with you to do the book exercise. So all of you please get ready. Now we will be doing the book exercise. Exercise number 8. Tick the correct option.
food is cooked in the kitchen, bedroom or study room? Where do we cook food? In the kitchen. So just put a tick mark here in option number A. Now let's do the next one. Number 2. A family entertains guest in a family. Guest को कहाँ बिठाती entertain करती है? A. Dining room, B. Living room or C. Bathroom. Where? In the living room. Yes, this is the right option. So all of you, please tick it. The option B, you have to tick option number B. Number 3. Fresh air and sunlight enter through. Fresh air और sunlight कहाँ से enter करते हैं? Roof से, wall से या windows से? Roof से तो नहीं enter कर सकते, wall से भी नहीं कर सकते. कहाँ से करेंगे? Windows से, है ना? Now, number B, using the clues, fill in the blanks. See, already some words are given. Okay, clues are given. You have to use these clues at the right place. So, number 1, different dash are used for different purposes. अलग क्या चीज़ है जो अलग अलग purpose के लिए use होती है? Different rooms. What is the spelling of rooms? R-O-O-M-S. Rooms. So now you please write it down in your book. Number 2. Some houses have a dash. What does some house has? I just told you that some house which are generally in the ground floor, they also have a very nice where there is a grass, there are flowers. So which place it can be? A lawn. Yes, some houses have a lawn. And what is the spelling of lawn? L-A-W-N. Lawn. Great. Now number 3. Members of a family read books in a सारे members family के book कहाँ पढ़ते हैं? Study room. Yes. Which room is allotted to study? Study room. And what is the spelling of study? S-T-U-D-Y. Study, R-O-O-M, room. Study room. Now number 4. We should keep our houses dash and dash. It's a very important point. Tell me what it should be. We should keep our houses neat and clean. Yes. So what is the spelling of neat? N-E-A-T, neat. And spelling of clean? C-L-E-A-N, clean. Right? So please you do it in your book. Okay. So hope that you have done till now. Now let's do number C. Match the picture with their names. Study room. So which picture shows the study room? This one? No. This one? No. This one? Yes, this one. So this is a study room. Now next one, bedroom. Where is the bedroom? Is this a bedroom? No. Is this one? Yes, it's a bedroom. Next one, bathroom. Where is the bathroom? This one. Yes, this is a bathroom. And where is the living room? This one, of course. This is the living room. So you also need to draw the line straight using the scale. Okay, you all have a scale. So please now draw a straight line to match the names of the room along with the picture. Okay. So after matching this, children, this exercise number D, question answer, this we are not supposed to do it in here in the book. We will be doing it in the notebook. Okay. Now let's see the next page, beta. This one, the next page, activity. This I am giving you as a homework for today. Okay, this is your homework. What is your homework today? Let me just repeat it out. So exercise A says, stand in the balcony of your house in the evening. Describe your feelings. आप balcony में खड़े होइए शाम को और अपनी feeling share करिए. जैसे आप creative writing लिखते हैं ना topic पर, so the same way you have to write 5 lines on the things that you see. Like maybe आप बहुत कुछ लिख सकते हैं. In front of my house, or when I'm standing here in the balcony, I can see the sunset.
right? And the sky looks very nice. It is orange in color, or I can see in front of me there is a road. There are so many vehicles going on, and people are just busy doing their work. A vendor is selling something, right? A hawker is maybe selling vegetable or anything, right? And maybe you have seen some animal. So anything you can describe whatever you have seen in when you stand in the balcony in the evening. Okay, so just not more than 5 to 6 lines. More than five to six lines is more than sufficient. Okay, so you have to do this as an activity in your EVS notebook. Okay, now number B, this particular exercise you have to do it here in the book itself. ये आपको book में ही करनी है. And what is it? Given below are 20 household objects. Where do you find them? Put them in the correct categories. आपके देखिए 20 ऐसे categories names दिए हुए हैं. आपको ये बताना है कि ये सारी चीजें कौन से रूम में आपको मिलती है. See, there are some names given, right? So this is a bathroom, bedroom, living room, dining room, kitchen and study. राइट, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल स्टडी टेबल. तो स्टडी टेबल आपको कहाँ मिलेगी? बाथरूम में, बेडरूम में? नहीं ना, स्टडी रूम में. सो यहाँ आप लिखेंगे स्टडी टेबल, राइट. लाइक गैस स्टोव आपको कौन से रूम में मिलेगा? किचन में, राइट. तो आप किचन के आगे यहाँ क्या लिखेंगे? गैस स्टोव. बकेट कहाँ मिलेगा? बाथरूम में. बेडरूम में. चिमनी कहाँ मिलेगी? चिमनी ऑफ कोर्स किचन में ही मिलेगी, है ना. चिमनी हम कहाँ फिट करते? किचन में. डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम में. सोफा सेट लिविंग रूम में. मग बाथरूम में. फ्रिज कहाँ होगा? फ्रिज डिपेंड करता है आप अपना फ्रिज को कहाँ रखा है. डाइनिंग रूम में भी हो सकता है, किचन में भी हो सकता है ना, आप जहाँ रखते हैं. यूटेंसिल्स कहाँ होंगे? किचन में होंगे ऑफ कोर्स. चेयर्स कहाँ होंगे? चेयर्स स्टडी टेबल के साथ चेयर्स की जरूरत होगी तो वो स्टडी रूम में होंगे. बुक शेल्फ कहाँ होगा? बुक शेल्फ स्टडी रूम में होगा. नाइट लैम्प भी स्टडी रूम में होगा. माइक्रोवेव कहाँ होगा? माइक्रोवेव किचन में होगा. शावर कहाँ होगा? बाथरूम में, है ना. एंड पेन कहाँ होगा? पेन स्टैंड भी स्टडी रूम में होगा. सेंटर टेबल कहाँ होगा? सेंटर टेबल जहाँ पे हम हमारे गेस्ट को फूड सर्व करते हैं, स्नैक्स सर्व करते हैं, तो वो होगा आपका ड्राइंग या लिविंग रूम में, है ना. लिविंग रूम में होगा. कबर्ड कहाँ पर होगा? वो होगा बेडरूम में, है ना. कबर्ड विल बी इन दी बेडरूम. और कुशंस कहाँ होंगे? कुशंस भी बेडरूम में होंगे, है ना. So this is how you have to write down and complete your homework. Okay, so hope children now you have understood, right? And there is no more confusion. So today you have to complete your homework. You have 2-3 different types of homework today. Activity to stand in the front there in the balcony in the evening and see that what all things you see, and then you have to write it down in your EVS notebook. Also you have to search about Rashtrapati Bhavan and see that what all informations you get. And the third homework is that you have to complete the book exercise. Okay, and yes, fourth thing, very important beta, whatever exercise that you have done in the book, you need to learn it. Okay, so तुरंत का तुरंत अगर हम learn कर लेते हैं तो हमें जल्दी भी learn हो जाती है और फिर बाद में चीजें इकट्ठा भी नहीं होती है ना. So all of you please complete your work and do the homework also. So that's all for today. We will meet again in our next class. Till then, just take care of yourself and keep yourself happy and cheerful always. Have a great day ahead.